Question number 9 is in triangle ABC. In triangle ABC, right angle at B, if tan A is equals to 1 upon root of 3, then find the values of sin A into cos C plus cos A into sin C. Second value, cos A into cos C minus sin A into what? Sin C. फर्स्ट हमें गिवन में दिया है ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी. सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी. सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी. ओके, नाउ हियर दिस इज पॉइंट ए, मीन्स वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी एंड दिस इज वर्टेक्स सी. Right angle at B, therefore measure of angle B is equals to what? 90 degree. If measure of angle B is equals to 90 degree, triangle ABC is a right angle triangle, and if it is a right angle triangle, AC is their hypotenuse because AC is opposite to angle B. So given things that tan A is equals to 1 upon root of 3, that is given things. So right here given. You got it? After that, we know that the tan ratio. So tan ratio is equals to opposite side of angle theta upon adjacent side of the angle theta. Now tan A ratio means what? The opposite side of angle A upon adjacent side of angle A. Now here the opposite side of angle A is ABC. Now in the triangle ABC, ये वाला एंगल आपका A. सो एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी आ गया आपकी? बीसी. सो बीसी इज द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए एंड ए बी इज द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए. एसी तो आपका हाइपोटेन्यूज था, बराबर है. सो tan A इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन व्हाट? ए बी. बट गिवन दैट tan A इज इक्वल्स टू 1 by root of 3, so is equals to 1 by root of 3. Then we get the ratio BC upon AB is equals to 1 by root of 3. Now हमें जो शो करना है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वहां पे साइन एंड कॉस रेशियो को बोला गया है. सो साइन एंड कॉस रेशियो अगर हमें फाइंड करने हो तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए हाइपोटेन्यूज की. किसकी होनी चाहिए? हाइपोटेन्यूज की. और अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो रेशियो है हमारा 1 by root of 3, उसको कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहां पे मैंने बोल दिया लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. सो लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन रेशियो बी एक्स अगर होगा तो बीसी की वैल्यू होगी 1 into x, दैट इज 1x. देयरफॉर BC is equals to x and AB is equals to root of क्या बनेगा? 3x बनेगा. Got it? After that, अगर हमें BC and AB की वैल्यू अगर मिल गई तो उससे हम यहाँ पे AC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. Why? Because ट्राइंगल ABC ये राइट एंगल ट्राइंगल. सो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC, measure of angle B is equals to what? 90 degree. Therefore, it is a right angle triangle. And if it is a right angle triangle, to find the hypotenuse, use Pythagoras theorem. So, give them support there by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, according to the Pythagoras theorem, in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. So square of the hypotenuse means what? AC square. So AC square is equals to what? AB square plus BC square. Got it? Now, so AC square की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी. AB is equals to root of 3. यहाँ पे लिख दिया मैंने root of 3x bracket square plus the value of BC is equals to x, so x square. Now root of 3 square means what? Root of 3 का स्क्वायर बनेगा 3 and x का स्क्वायर बनेगा x square plus आपका x square as it is. So this is 4x square. This is the value of AC square. हमें वैल्यू मिली AC square की, लेकिन हमें फाइंड करना था AC, इसलिए यहां पे हम बोलेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट on both sides.
So taking square root on both sides, we get the value of AC. So AC is equals to 2x. चलो हमें AC की वैल्यू मिल गई और वो वैल्यू थी हमारी 2x. ओके, अब AC की वैल्यू मिलने के बाद हमें तो इवेल्युएट करना था sin A इंटू cos C एंड cos A इंटू sin C, cos A इंटू cos C एंड sin A इंटू what sin C. सो फर्स्ट हमें जो इवेल्युएट करना है उसको ले लिया मैंने, यहां पे लिख दिया sin A इंटू cos C प्लस cos A into what sin C. Got it? Then the value of sin A means what? Sin ratio क्या बोलता है? Opposite side of angle A upon hypotenuse. So opposite side of angle A is a BC. So right here BC upon hypotenuse AC into the value of cos C. cos C की वैल्यू क्या आएगी? cos C बोला है, बराबर. cos क्या बोलता है? adjacent side upon hypotenuse. Then cos C means what? adjacent side of angle C upon hypotenuse. So adjacent side of angle C is a BC. So this is BC upon what? AC. Sin plus as it is. After that cos A, again cos ratio क्या रहता है आपका? adjacent side upon hypotenuse. So adjacent side of angle A is a AB. So right here AB upon hypotenuse आपका same as it is AC into sin C की वैल्यू sin ratio opposite side upon hypotenuse. Sin C means what? Opposite side of angle C upon hypotenuse. So opposite side of angle C is a AB. So right here AB upon AC. Got it? After that, so BC upon AC into BC upon AC. So the value of BC is equals to हमने फाइंड की थी x, मीन्स वो रहेगी x only. x upon AC is equals to 2x into same value है x into x upon 2x as it is plus AB. The value of AB is equals to root of 3x. So that is root of 3x upon 2x, again root of 3x upon 2x. Okay, now x are cancel out, multiply divide both are cancel out. यहां पे बचा आपका 1 upon 2 into 1 upon 2. तो हमने लिख दिया 1 upon 2 into what? 1 upon 2 plus root of 3 upon 2 into root of 3 upon 2. Then we get 1 into 1 is equals to 1 ones are 1, 2 twos are 4, plus root of 3 into root of 3 is equals to what? Root of 3 square. So that is 3. 3 upon 2 twos are 4. The denominator of both the fraction is same. That is 1 upon 4 plus 3 upon 4 means denominator is 4. If denominator of both the fraction is same, then it becomes common. So अगर हम इसको common कर लेंगे तो numerator की खाली addition हो जाएंगी. So 1 plus 3 upon 4. That is 4 upon 4 is equals to what? 1. So final answer क्या होगा आपका? 1. किसका आंसर 1 आया आपका? sin A into cos C plus cos A into what? sin C. Then यहां पे मैं सेकंड सॉल्व करा. सेकंड में हमने बोला है cos A into cos C minus sin A into sin C. So again using cos ratio. So cos ratio means what? Adjacent side of angle A upon hypotenuse. So adjacent side of angle A is AB. So हमने लिख दिया AB upon AC into cos C means what? The adjacent side of angle C upon hypotenuse. So adjacent side of angle C is a BC. So BC upon AC minus sin A means what? Opposite side of angle A upon hypotenuse, that is BC upon AC into sin C means what? Opposite side of angle C upon hypotenuse means AB upon AC. Put the values AB upon AC. So AB is equals to what? AB is equals to root of 3 into x. So root of 3x upon 2x into x upon 2x minus
x upon 2x into root of 3x upon 2x. Okay, x cancel out. Okay, now root of 3 into 1 is equals to root of 3 as it is upon 2 2s are 4 minus यहाँ पे root of 3 into रहेगा 1, so root of 3 into 1 is equals to root of 3 by 4 as it is root of 3 by 4 minus root of 3 by 4, यहाँ पे प्लस माइनस सेम नंबर जाएगा, कैंसल आउट इज इक्वल्स टू 0. सो फाइनल आंसर इज 0. ये वैल्यू है आपकी cos A into cos C minus sin A into what? Sin C. Okay.